which is Maxwell equation. So in this session, I'll be discussing with you the concept of electromagnetic induction, the concept of inductance, and the concept of Maxwell equation. Chaliye. So beta, in the previous lecture, we covered the concept of magnetism. So magnetostatics is the study of static magnetic field where magnetic field does not vary with time. We saw magnetic field lines form closed loop. They are solenoidal. That means there is no magnetic monopole. And the sources of magnetic field are moving charges and the magnetic dipoles. So we saw the source of a magnetic field is a line current, current flowing in a wire, a surface current, current flowing at the surface of a solid, and a volume current which we take as JdV. So IDL is the current element, KDS is the current element, and JdV is your current element. So this was the equation for the magnetic field as per the Biot-Savart law. Okay. Then beta, we saw the application of Biot-Savart law in finite straight wire, circular loop at the center, circular arc at the center, and at the axis of the circular loop. We saw the Ampere's law in the integral form, in the differential form. Okay. We saw the magnetic field due to a long solenoid, toroid, infinite sheet, and also a long cylinder. We saw the Lorentz force on a moving charge. It is due to the electric field as well as the magnetic field. On current element, IDL cross B. Force between two parallel wires, we saw if they carry current in same direction, the force is attractive. If they carry the current in opposite direction, the force is repulsive. Okay. Then we saw magnetic moment, current into area, the torque on a magnetic dipole, M cross B, field of a dipole. This is similar to the electric dipole, and potential energy minus M dot B. Again, same formula as the electric dipole. Okay. Then beta, we saw the scalar potential, H is minus gradient of Vm, J is 0. And vector potential B is del cross A. This is always valid, but scalar potential is only valid in the region where current is 0. Poisson equation, del square A is minus mu J. Now beta, normal, the boundary condition, the normal value of flux density is constant, tangential value of H, the difference is K, and if K is 0, both are constant, then we get a Snell's law kind of a law, tan theta 1 by mu 1 equal to tan theta 2 by mu 2. सर EMFT सेमेस्टर में पढ़ा है? हाँ, अगर एक बार पढ़ चुके हो तो क्रैश कोर्स से कर सकते हो. सर आप जो एनालॉग की क्लास लोगे 4:30 होगी RIB बैच की. अगर पेड कोर्स में बात करो तो नहीं, उसको 11 बजे लगाऊंगा. ठीक है, पेड कोर्स में RIB मंडे से चालू होगा और 11 बजे उसको स्टार्ट करेंगे. चलिए. Then we saw the energy in a magnetic field, half Li square. Energy density was half B dot H, which is B square by 2 mu. So total energy is the volume integration of energy density. So we saw Biot-Savart law, Ampere law, solenoid field, force between wire, dipole moment, vector potential. Okay. So whenever beta the current distribution is symmetric, we should always use the Ampere's law. If not, we have to go by basic, that is the Biot-Savart law. We have to apply boundary condition at the interface of material. Del dot B is always 0, del cross H equal to J. Okay. Chali. Now I will come to beta topic of the day, electromagnetic induction. So beta, Faraday was a scientist who discovered the concept of electromagnetic induction. So what did he discover? In case beta, in case the flux in through a coil changes with respect to time, then beta the current flows or a EMF is produced which is proportional to the rate of change of flux. So he said E equal to d phi by dt, and if the coil has n turns, E equal to n d phi by dt.
So we say E equal to d lambda by dt beta, where lambda is n phi, that is number of turns into flux, that is called as flux linkage. Okay. So what did Faraday discover? Faraday discovered beta, he took a coil. Faraday ने क्या किया? एक coil लिया. Whenever he brought a magnet near to the coil, or he moved the magnet away from a coil, so he observed that a current was induced and the reading was taken on the ammeter. तो देखिए, when he was moving the magnet away, the reading was positive. When he was moving the magnet towards, the reading was negative. And when the magnet was stationary, the reading was 0. So this led him to discover that if the flux through a coil changes, then EMF and current will be induced. But if you keep the flux stationary or the flux constant, then no EMF or current will be produced. अगर आप फ्लक्स को कांस्टेंट रखेंगे तो कोई EMF या करंट नहीं आएगा. मैग्नेट को पास या दूर ले जाने से फ्लक्स बदलता है तो करंट इंड्यूस होता है, और डायरेक्शन चेंज करने से, मोशन का डायरेक्शन बदलने से करंट का डायरेक्शन भी चेंज होता है. ओके, तो बेटा as soon as he closed the switch, this is like a transformer where there is primary or a secondary coil. As soon as he closes the switch, he sees a reading on the ammeter, but then the reading becomes 0. And again when he opens the switch, there is a deflection on the ammeter and then it becomes 0. Which means beta, there is deflection in the ammeter only when the magnetic field changes. After closing the switch, because of battery, the magnetic field will remain constant and there will be no deflection on the ammeter. But as soon as he changes the status of the switch, open to closed or closed to open, there will be a deflection on the ammeter. Okay. So now beta, when we take the magnet away, so what did he discover? When we take the magnet towards the coil opposes the motion of the magnet. The coil produces a north pole to repel this north pole. To repel the north pole, north will be induced. For that, magnetic field should be downwards. So current goes inside on the left, comes out on the right. क्या कह रहा हूं? अगर मैग्नेट पास लाते हो तो ये उसे रिपेल करने के लिए यहां नॉर्थ पोल बनाता है. मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के अंदर कहां होती है? साउथ से नॉर्थ. मैग्नेट के बाहर होती है नॉर्थ से साउथ, अंदर होती है साउथ से नॉर्थ. तो अगर यहां नॉर्थ है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगी, जिसका मतलब करंट लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर. ऑलवेज रिमेंबर, इनसाइड अ मैग्नेट द फील्ड लाइंस विल गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड अ मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ. नाउ बेटा सपोज वी आर टेकिंग द मैग्नेट डाउन. अब मैं मैग्नेट को नीचे ले जा रहा हूं. टू अपोज द मोशन इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट द मैग्नेट. मोशन अपोज करने के लिए मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा. टू अट्रैक्ट द नॉर्थ पोल, साउथ विल बी इंड्यूस्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी अपवर्ड, साउथ टू नॉर्थ. तो करंट विल गो इनसाइड ऑन द राइट एंड कम आउट ऑन द लेफ्ट. करंट राइट से अंदर जाके लेफ्ट से बाहर आ जाएगा. तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी अपवर्ड्स. So if you see beta, when I change the motion of the magnet moving up to moving down, the direction of current reverses. जब मैं मैग्नेट का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करता हूं तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है. दैट वाज डिस्कवर्ड बाय फेराडे. ईएमएफटी का वेटेज बेटा अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 5 से 6 नंबर का रहता है. ओके, नाउ लेंज वाज अ साइंटिस्ट दैट टुक द फेराडेज लॉ फर्दर. He told one additional statement that induced EMF opposes the cause of induction, which I told you here. If you are moving the magnet up, it will try to repel it. When you are taking the magnet down to oppose, it will attract it. अगर दूर ले जाओगे तो अपोज करने के लिए अट्रैक्ट करेगा, पास लाओगे तो अपोज करने के लिए रिपेल करेगा. तो that means the main cause of induction was the changing flux. So the current or EMF is produced in such a way that change of flux is opposed
that is coil tries to maintain the flux constant. यानी जब आप फ्लक्स को बदल रहे हो तो ईएमएफ ऐसे पैदा होगा कि वो फ्लक्स को कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा. So to show this opposition beta, he inserted a minus sign in the Faraday law. उस opposition को दिखाने के लिए उसने क्या किया? उसने Faraday law के अंदर एक minus sign लगा दिया. ठीक है? He inserted a minus sign into the Faraday's law. Now beta, current direction we can derive conceptually. If you are deriving current direction like this, no need to use a minus sign because you have already considered opposition. So when there is a EMF in a coil, coil is a closed loop. coil एक closed loop होती है. एक loop के अंदर अगर EMF है, that means the line integration of electric field over a closed loop will be non-zero because EMF is nothing but, as per EMFT, EMF is the line integration of electric field. EMF जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है. नवीन भाई वैसे तो देखो जो इलेक्ट्रिकल का EMFT है उसमें से सवाल इसी में भी आ जाते हैं, 1-2 नंबर तक तो पूछ ही लेते हैं, तो करने को तो आप पूरा कर सकते हो. तो बिकॉज द EMF इन अ लूप इज नॉन जीरो, द लाइन इंटीग्रेशन विल बी नॉन जीरो. तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव. So the differential form of Faraday's law says that curl of E is minus del B by del T. So if the magnetic field does not change with time, so curl of E will be zero, which means electric field will be conservative. If magnetic field changes with time, curl of E will be non-zero, electric field will be non-conservative. Which means beta, electric field produced by charges is conservative, but electric field produced because of time varying magnetic field is non-conservative. Okay, is non-conservative. So we saw that when we move a magnet close to the coil, so coil tries to oppose it. So coil's magnetic field will be to the left. अगर ये मैग्नेट पास ला रहे हो अपोज करने के लिए, कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट में होनी चाहिए, तो करंट विल बी लाइक दिस. समझे? क्योंकि कॉइल को भी नॉर्थ पोल बनाना है ना बेटा. व्हेन नॉर्थ इज कमिंग नियर टू द कॉइल, कॉइल मस्ट आल्सो प्रोड्यूस नॉर्थ पोल टू रिपेल दिस. तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी लेफ्ट एंड करंट विल बी शोन बाय द पर्पल एरो. इफ वी आर मूविंग द मैग्नेट अवे to oppose the motion, it needs the south pole. So magnetic field will be to the right because here you will have a south pole. So current will be shown by this arrow. Current आपका ऐसा आएगा. So current direction reverses as soon as you reverse the direction of the motion of magnet. ठीक है? So as I told beta, when magnetic field changes with respect to time, these crosses are the magnetic field. तो जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करता है, then in a loop we will observe that there is a EMF. लूप के अंदर अपने को EMF नजर आएगा. And EMF is line integration of electric field. So if EMF is there, electric field will be there. But this electric field will be non-conservative. That means line integration of electric field over the loop will be non-zero. Line integration electric field का over the loop will be non-zero. तो देखिए भाई, EMF will be integration E dot dl. So E into 2 pi r because length of the loop is 2 pi r. Now flux is B into pi r square. EMF is minus d phi by dt. So now I am saying this magnetic field is varying with time. The area of the loop is constant. इस लूप में से जाने वाले फ्लक्स के लिए B इंटू एरिया कर रहा हूं, एरिया फिक्स है. बट दिस ग्रीन एरो, द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम. सो व्हेन यू टेक माइनस डी फाई बाई डी टी माइनस पाई आर स्क्वायर डेल बी बाई डेल टी. So now R will be cancelled. So minus R by 2 del B by del T is the induced magnetic field. Sorry, induced electric field. तो इस तरह से induced electric field निकलती है. You equate the EMF because of electric field, that is line integration of E dot dl, and
you equate the Faraday's law. तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फैराडे लॉ वाले ईएमएफ से बराबर कर देना, तो आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी. Similarly, beta, whenever a conductor moves in the presence of magnetic field, then also we have a EMF called as a dynamic EMF or a motional EMF. This is the formula. V vector is the velocity of the conductor with respect to magnetic field. L is along the conductor. It represents the length. Now to find the polarity of EMF, take cross product of V and B, velocity and flux density. Whatever is the direction of cross product, show it by a arrow. That arrow will be from negative terminal to positive terminal. So you can identify the negative and positive terminals on the conductor. आप क्या करिए, V क्रॉस B करिए. V क्रॉस B का जो भी डायरेक्शन आएगा वो डायरेक्शन एक एरो से दिखाइए, और वो एरो आपका ना माइनस से प्लस वाले टर्मिनल की तरफ जाएगा, तो आपको कंडक्टर पे माइनस से प्लस टर्मिनल नजर आ जाएंगे. ठीक है. Now, if you combine all the laws, that is the Faraday law, del cross E is minus del B by del T, and del cross E is del cross B cross B. This is the general form where we have included motional EMF as well as the static EMF. Now, if a conductor is rotating in a magnetic field, how to deal with that? So, take a small portion of the conductor at a distance x. The length will be dx. अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, V vector and conductor are all perpendicular to each other, EMF will be BLV. EMF will come out as BLV. हाँ जी. So I will take a small length dx at a distance x. So if it is rotating with a velocity omega, the linear velocity will be radius into omega. The radius of the path of this dx length is x. ये जो dx का छोटा सा हिस्सा, इसका radius x है, तो x omega हो गया. Now what will be the EMF? B x omega into dx. B x omega यानी कि B into velocity into dx. तीनों परपेंडिकुलर हैं. कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी. देखो ना, ये वेलोसिटी है, कंडक्टर के परपेंडिकुलर है. दिस इज कंडक्टर, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड. इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ. भाई यहां पे आपको ये नजर आ रहा है कि कंडक्टर और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड तो पूरे बोर्ड के अंदर जा रही है, तो इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम. So all three are perpendicular. Directly I am applying B, L, V. Velocity is x omega. Now I can integrate this from 0 up to L. So B omega L square by 2. B omega L square by 2. Next I will talk about inductors. So what is inductor? Inductor is the element that opposes the change of flux. So just like we saw, there is induced EMF in the coil, and induced EMF opposes the cause of induction. What is cause of induction? Change of flux. So similarly, inductor is particularly designed for that effect. Inductor को बनाया ही इसलिए जाता है to oppose the change of flux. So what we have is, we have a magnetic material over which we wind the wire n number of times. n बार वायर को लपेटते हैं. So it is a solenoid. It is a solenoid. Now whenever it will carry a time varying current, जब इसके अंदर से पास होने वाला करंट टाइम के साथ वेरी करेगा, the flux will also vary with time. If the time varying flux
produces the EMF in the same coil. जब टाइम वेरिंग फ्लक्स इसी कॉइल के अंदर EMF बनाएगा, it is known as self induction, and the proportionality constant between the flux linkage and current is called self inductance. तो ये समझिए, जब मेरा ही फ्लक्स मुझी में EMF बनाए तो इसे कहता हूं सेल्फ इंडक्शन, और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है फ्लक्स लिंकेज और करंट का, उसे हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। तो जब भी यहां से करंट फ्लो करेगा बेटा, it will produce the magnetic field, it will produce the flux density, and once it produces a flux density, it will produce a flux and a flux linkage, which is proportional to the current. So whenever we talk about a small coil of radius r, what is the flux density at the center? Mu naught I by 2r. ठीक है? And when there are n turns, तो mu naught ni by 2r. So flux is B into area. Okay. Flux linkage is number of turns into phi. Now, if you divide the flux linkage by current, you get the inductance. ठीक है? So by that you can find inductance of a small circular coil. This formula we actually derived in the previous session. We talked about this in the previous lecture. Now when we talk about a solenoid, magnetic field inside solenoid is Ni. N is the number of turns per unit length, that is total turns by L. So mu B is mu H, mu Ni by L. मैंने small n को capital N by L कर दिया, where L is the length. Okay. Now flux is B into area. A is the cross sectional area. So mu Ni A by L. Now flux linkage is N phi. So mu N square I A by L. Now if you divide flux linkage by current, you get the inductance. This formula many of you might already know. Mu N square A by L. Okay. Now when we talk about a toroid is nothing but a circular solenoid. So I told you we take the mean radius. Mean radius is R1 plus R2 by 2, inner and outer radius average. So the length is taken as the circumference pi R1 plus R2. Now I told you in the previous session that the cross section is a circle. The diameter of this circle is actually R2 minus R1. इसका जो diameter है, that is R2 minus R1. So the area is pi d square by 4, pi by 4 R2 minus R1 square. So I have the area, I have the length. Apply the same formula as the solenoid. तो याद रहे बेटा, in toroid, the length is the circumference of the mean radius 2 pi R1 plus R2 by 2, and area, find the diameter R2 minus R1, then pi d square by 4. Okay, next you can talk about coaxial conductors like a coaxial cable. This formula you study under power system, that inductance per unit length is mu by 2 pi log B by A. B is the outer radius, A is the inner radius. This formula is same as power system. Same as external inductance of a line in power system. Okay, then you talk about mutual inductance. So beta, if at all one coil produces a flux which causes an EMF in the other coil, अगर एक coil ने flux बनाया, उससे दूसरी coil में EMF पैदा हुआ, so then this is called mutual induction, and the proportionality constant between mutual flux and current is called as mutual inductance. म्यूचुअल फ्लक्स और करंट के बीच का जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, उसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो सपोज करंट थ्रू द कॉइल 1 इज I1
It produces the flux in 2, that is phi 1 2, flux of 1 in 2. Now this flux will link with the N2 turns in the second coil. ये जो phi 1 2 है, ये क्या है? 1 का वो फ्लक्स है जो 2 तक जा रहा है. अब 2 में कितने टर्न्स है? N2. तो फ्लक्स लिंकेज इज N2 phi 1 2. You divide it by 1 I1, you get the M12 mutual inductance. Now suppose current in coil 2 is I2. The flux of this reaches the coil 1, which is phi 2 1. It will link with the N1 turns of first coil. So flux linkage N1 phi 2 1 divided by the cos, which is I2. You will get M21. Now M21 and M12 both are equal, which is written as mutual inductance. So mutual inductance causes the change of current in one coil, is responsible for EMF induced in the other coil. एक कॉइल का करंट चेंज होने से दूसरी कॉइल में EMF बनता है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है. तो सपोज आई टेक अ सोलेनॉइड अराउंड विच आई हैव अ कॉइल. एक सोलेनॉइड के चारों तरफ मेरे पास एक कॉइल है. तो व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस? So I will say that solenoid is producing a magnetic field which is Ni, number of turns per unit length into I. ठीक है, N1 by L1 into I1. Now B will be mu H. Now the flux, see, the magnetic field of the solenoid is only in this area. सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस एरिया में, पूरे R2 रेडियस में नहीं है. तो फ्लक्स विल बी B इंटू पाई R1 स्क्वायर, B इंटू पाई R1 स्क्वायर. तो म्यू N1 I1 बाय L1 पाई R1 स्क्वायर. ठीक है. Then beta, this entire flux passes through the coil of radius R2. So the flux linkage with R2 is the same flux. If it has N2 turns, multiply it by N2. Multiply it by N2. ठीक है. So this coil has N2 turns. This solenoid has N1 turns. So for flux linkage, we are multiplying by N2. Now divide it by the current to find the mutual inductance. It is mu N1 N2 A by L, where A is pi R1 square. A is the common area between solenoid and the ring. सोलेनॉइड और रिंग में जितना एरिया कॉमन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले में उतना ही एरिया लिया जाता है. नेक्स्ट बेटा, देयर केम अ साइंटिस्ट कॉल्ड मैक्सवेल who collected the laws of electromagnetism into something called as the Maxwell equation. उसने क्या किया? उसने सारे लॉज को कलेक्ट किया, जो भी हमारे लॉज थे, किसके? मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, और उसको बोला मैक्सवेल इक्वेशन. बट ही मॉडिफाइड द एम्पियर्स लॉ. ही इंट्रोड्यूस्ड अ एडिशनल टर्म कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट. So he said that even though the plates of capacitor have a dielectric in between, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है, which is a insulator, still a current flows whenever you apply a AC source. AC source लगाने पे करंट तो फ्लो होता है. That current is actually C dV by dt. So he found the current density as del D by del T, where D is the flux density, or you can say displacement flux density. So he called this current as displacement current density because it is due to the displacement of charges, the charges getting displayed between the two plates of capacitor. कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में जो चार्जेस फ्लो करते हैं, जो डिस्प्लेस होते हैं, उनसे जो करंट बनता है, उसकी डेंसिटी को बोला डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी. So now beta, we also had a continuity equation. So continuity equation says that Ampere's law can only be valid if del rho V by del T is 0. क्योंकि देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूं कि एम्पियर्स लॉ कहता है बेटा डेल क्रॉस H इज J.
And we have a null identity that curl of divergence should be 0. We have null identity, divergence of curl is 0, which means del dot j should be 0, which means d rho v by dt should be 0. यानी there should be no leakage of charge. कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बताती है बेटा? चार्ज के लीकेज के बारे में. मैंने एम्पियर्स लॉ में जब डाइवर्जेंस लिया तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल 0 आना चाहिए, यानी डाइवर्जेंस ऑफ जे 0 आना चाहिए, यानी कंटिन्यूटी इक्वेशन वॉयलेट हो गई, या ये कह लो कि आपका एम्पियर्स लॉ तभी चल सकता है जब डाइवर्जेंस ऑफ जे आपका 0 आ जाए. ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर टाइम वेरिंग फील्ड. Therefore, beta, Maxwell corrected the Ampere's law. He added one term, which is the displacement current density. So he modified the Ampere's law. So del cross H is J plus del D by del T, or del cross H is J plus epsilon del E by del T, because D is equal to epsilon E. And beta, this is called as the conduction current density. So conduction current is like a current through a resistor, and displacement current is like a current through a capacitor. They are at 90 degree to each other. कंडक्शन करंट ऐसा है जैसे एक रजिस्टर से करंट जा रहा है, यानी वोल्टेज के सेम फेज में. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट करंट जैसे कैपेसिटर जो 90 डिग्री लीड करता है, तो दोनों के बीच में 90 का शिफ्ट है. तो वी हैव द मैक्सवेल इक्वेशन, गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म, इन इंटीग्रल फॉर्म, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म इंटीग्रल फॉर्म, फेराडेज लॉ इंटीग्रल फॉर्म, एंड द मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ. So actually beta, Maxwell only modified one law, that was Ampere's law, and he collected 4 laws of electromagnetism and gave them the name of Maxwell equation. उसने एक को मॉडिफाई किया, 4 लॉज कलेक्ट करके बोल दिया ये होती हैं जी मैक्सवेल इक्वेशन. ठीक है. Now if electric and magnetic field are varying sinusoidally or like e to the power j omega t, then their derivative can be written as j omega. जैसे फोरियर में करते हो ना, t by dt is replaced by j omega. So if you do that, you can modify the Faraday's law. Del b by del t will become omega j omega mu h, and del e by del t will become j omega epsilon e. तो आपने क्या किया? डेरिवेटिव की जगह j ओमेगा लगा दिया. What you do with the Fourier transform? It is only possible if E and H are varying like sinusoids or e to the power j omega t. अब देखो ये सारे फॉर्मूले हैं, जो भी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की हैं. चलिए, come to the daily quiz बेटा. A circular loop is placed in a magnetic field. Find the EMF at 0.005 second. बनाइए. आपको ईएमएफ बताना है, मैंने आपको इंस्टेंट भी बता दिया, किस टाइम पे बताना है, आपको रेडियस बता दिया, फ्लक्स डेंसिटी बता दिया. नवीन भाई, जितना भी आपने फॉलो किया है सारी ही चीजें आ सकती हैं आपके केस में भी. इसी में अब कहां से सवाल पूछेगा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि आपके प्लेन वेव वगैरह टॉपिक्स के लिए सब फंडामेंटल है. नाउ सी, फ्लक्स इज b into pi r square. Okay. Minus of derivative of cos sine. $100
पाई स्क्वायर, 0.5 पाई स्क्वायर, .01 इंटू 100 तो कैंसिल हो गया, 0.5 पाई स्क्वायर, 5 के आसपास आना चाहिए, पाई स्क्वायर 10 होता है, साइन पाई बाय 2 हो गया, साइन 5/1000 हुआ ना, 5/2, 5 वोल्ट के आसपास आ रहा है यार। अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है, ये आ रहा है 0, कैसे यार, 0 कैसे आ रहा है, 5 आना चाहिए। A solenoid of length area turns has a current changing at 2 ampere per second. What is the EMF? अब देखिए EMF जो होता है ना वो L di by dt होता है। They have given me di by dt. If the material is not mentioned ना बेटा, I will take air as the medium. Okay. 10 to the power minus 10, 25 into 400, 100 into 10 की power 4, तो 10 की power 6. ट्वेल्व समथिंग होगा, 1.2. 0 कैसे आ रहा है, यही तो पूछ रहा हूँ बख्शी जी। ये देखो यार, which of the following Maxwell equation is incorrectly paired with its meaning? कौन सी मैक्सवेल इक्वेशन अपने मीनिंग के साथ गलत पेयरिंग में लिखी गई है, बोलिए क्विकली। डेल डॉट डी इक्वल टू रो वी, गॉस लॉ है, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल टू चार्ज एनक्लोज, डेल डॉट बी जीरो, नो मैग्नेटिक मोनोपोल, यस। नाउ दिस इज रॉन्ग, it says a time varying magnetic field produces electric field. ये उल्टा है, ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदल रहा है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो आंसर इज सी। फ्लक्स लिंकेज नंबर ऑफ टर्न्स इज गिवन, फाइंड द ईएमएफ एट 3 सेकेंड। बोलो भाई। फ्लक्स होना, फ्लक्स लिंक, d phi by dt will be 0.02 t. 12 वोल्ट आएगा यार, डेसिमल की गलती है। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी बताइए भाई, आई नीड द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी।
एल ई बाय डेल टी तो 1.77 वाला तो एक ही ऑप्शन है, ठीक है। Quickly, conductor of length 0.2 meter moves with a velocity 5 meter per second perpendicular to the magnetic field. What is the motional EMF? If everything is perpendicular, multiply. Very good. Two coils have mutual inductance 0.1 Henry. If current in coil 1 changes at 5 ampere per second, what is the EMF in coil 2? Current is changing in coil 1. I want the EMF in coil number 2. Point 5 volt. Choose the correct statement regarding Lenz law. Lenz law के बारे में which statements are correct? This is a MSQ beta. देखें, so first thing, induced EMF opposes the cause of induction or the change in magnetic flux. That is, it tries to maintain the flux constant. Yes. Negative sign is due to Lenz law. It is due to conservation of charge. Yes. This is wrong. Reinforce का मतलब होता है support. No. The induced current does not support the magnetic field but opposes the field. Oppose करता है बेटा. For a time harmonic field, which Maxwell equation in phasor form are correct? टाइम हार्मोनिक फील्ड के लिए कौन सी इक्वेशंस करेक्ट हैं? बताइए. Which equations are correct? This is correct. This is correct. This is correct. This is डेल डॉट बी जीरो आना चाहिए था. मैग्नेटिक मोनोपोल क्योंकि होता नहीं है. ठीक है. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. बोलो भाई. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कैसी होती है? कंजर्वेटिव. नो. नॉन जीरो आता है. यस. कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्पेस. यस. ऑलवेज प्रोड्यूस करंट. नहीं, करंट प्रोड्यूस होना जरूरी नहीं है. बिकॉज इफ द कॉइल इज ओपन सर्किटेड, ईएमएफ विल बी देयर बट करंट विल बी जीरो. देखो, फेराडे लॉ ये कहता है ईएमएफ बनेगा. करंट बनने के लिए यू नीड अ क्लोज पाथ. क्लोज पाथ में नॉट ऑलवेज बी अवेलेबल. क्लोज पाथ हमेशा अवेलेबल हो जरूरी नहीं है. चलिए, सी दिस. An induced EMF around a closed path is equal to the negative of time rate change of magnetic flux. It is the statement of induced EMF negative of time rate change of magnetic flux आएगा. ये किसका स्टेटमेंट है बेटा? Lenz law. Minus sign was introduced by Lenz law. चलो जरा ये ट्राई करके बताओ. ये इलेक्ट्रोस्टैट का सवाल है बट बनाइए. चलिए.
देखिए भाई, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ग्रेडियंट ऑफ V, तो -1/r del V by del theta, because there is only one component. What is the derivative of log? Log derivative is 1 upon x. Then we have to differentiate the term inside. फिर अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव कीजिएगा, तो अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव b sin थीटा 1 plus cos थीटा minus sin थीटा 1 minus cos थीटा, 1 plus cos थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, will be cancelled. Sin theta plus sin theta cos theta minus sin theta plus sin theta cos theta. Now beta, this 1 minus cos square theta, 1 minus cos theta, 1 plus cos theta will be 1 minus cos square theta, that is sin theta, sin square, minus 2a by r cot theta, 500, because it is given as magnitude cot 90, tan 90 is infinity. एक सेकेंड, गड़बड़ी किए हैं क्या हम? 1 plus cos theta by 1 minus cos theta, then derivative will be minus cos theta, it will be sin theta into 1 plus cos minus sin 1 minus sin plus sin cos minus sin plus sin. टू साइन थीटा बनता है कोसेक थीटा, कोसेक 90 which will be 1. Okay, so A will be how much? 1250. Now voltage is given as 100. Log B is 0.08. E will be e to the power point, which will be 0.92. यहाँ पे ना मॉड लग जाएगा, आंसर विल बी, ठीक है। A can be positive negative both but B is fixed 0.923. ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते, एक्चुअली ना A प्लस माइनस है, तो एक ही ऑप्शन सेट बैठेगा जो कि आपका C आएगा। Next, if we see two concentric conducting sphere have equal and opposite charges,
The total energy stored. Beta, when two concentric spheres have equal and opposite charges, it is just like a spherical capacitor. Now solve this. देखो भाई, EMFT छोड़ के जाने से भी रैंक तो आ ही सकती है। 6 नंबर छोड़ रहे हो ना, बाकी 94 तो कर ही रहे हो, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि कर नहीं पाओगे। बेटा, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, एनर्जी डेंसिटी वाला सवाल है, तो एनर्जी डेंसिटी निकालो, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, उसके बाद वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना है बस। दिस इज द कैपेसिटेंस ठीक है। ए बी मीन्स 96/10 96/9 okay. Why 10 की पावर -2? Because this is in centimeter. Now energy is Q square by 2C. टेन की पावर -4 by 6, 300/64 microjoule, 75/16, 16,464, 110, 16,696, ठीक है, 14, 140, 16, 7, 128, 120, 16, 75/16, 464, 108, 128, 120, 7, 4.6875, ठीक है। हाँ बेटा, मैंने देखा कि नया कैलेंडर आया है, 4.6875। अगला देखिए, मैग्नेटिक सर्किट हैज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 10 to the power -3. This is N1 turns, N2 turns, V1 voltage, V2 voltage. Okay. Now the current is given, N1 is given. What is the EMF in the coil of N2? What is the EMF in the coil of N2 turns? This radius is given as 10 centimeter. ये रेडियस जो बीच तक का है, that is 10 centimeter. आरआरबी जेई का कैलेंडर आया बेटा, आरआरबी के सारे एग्जाम्स का। देखो, इसको चाहो तो मशीन वाले फंडे से कर सकते हो, रिलक्टेंस। लेंथ इज 2 पाई into rho naught. Rho naught is 10 centimeter. Two hundred by 500. Now mutual inductance is N1 N2 by reluctance. So N1 N2 are 200 100.
0. M di1 by dt cos 100 pi t. It is 6 pi. But we will use a minus sign, तो आंसर will be C. मैं एक माइनस साइन लगाऊंगा तो आंसर C आ जाएगा. ओके Okay, now this is the situation. Bar is sliding at a velocity u, which is 20 ay. T is given 4 az. You need the EMF. बताओ जल्दी से. This is very easy. EMF कितना आएगा? निकाल भी लिए भाई. बहुत बढ़िया. ELV. ओके सर, पोलैरिटी कैसे निकालते हैं समझिए. देखिए, वेलोसिटी राइट में है, वेलोसिटी इज राइट, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड्स. ठीक है, वेलोसिटी राइट, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स लाइक दिस. टेक द राइट हैंड एंड रोटेट इट फ्रॉम वेलोसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड है आपकी तरफ, ये वेलोसिटी है, तो V क्रॉस B डाउनवर्ड्स. This arrow is always from minus to plus. Minus to plus. ठीक है, इट मीन्स द अपर टर्मिनल इज नेगेटिव, लोअर इज पॉजिटिव. ठीक है, ऊपर वाला नेगेटिव, नीचे वाला पॉजिटिव. समझे लॉजिक? कैसे निकालते हैं डायरेक्शन? चलिए, इन द फिगर शोन बिलो फॉर द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल एनर्जी इन रीजन 1 is 3 times the energy in region 2. What is capacitance of region 1? ये नजर आ रहा है ना? This is epsilon 1, epsilon 2. Okay. Now energy in region 1 is beta 3 times the energy in region 2. Okay. बेटा because electric field is tangential ना, since electric field is tangential to interface, electric field will be same. हाँ, y क्रॉस z कर सकते हो, माइनस एक्स आएगा.
बट y क्रॉस z तो पॉजिटिव x आएगा ना, माइनस x थोड़ी आएगा y क्रॉस। x डायरेक्शन में ईएमएफ आ रहा है। बोलो असलम भाई क्या बात करनी है। अब देखो देखो, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, now volume will be x into 3 1 mm okay. 7.5 equal to 6x. Okay. Now capacitance of region 1 epsilon 1 is 8.85 5.5 3.75 epsilon 5 epsilon 7.5 minus 5 आ रहा है 1 is 3u2। यहाँ पे हम ये 3 का फैक्टर लेना, ये गड़बड़। 3 इंटू 5 15 होगा, 15 इंटू 1.5 22.5 205.34। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल थी इसीलिए बराबर थी। नाउ सी दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मैक्सवेल इक्वेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मैक्सवेल इक्वेशन, बताइए इनमें से कौन सी मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है भाई, बोलो फटाफट। द वन
is not Maxwell equation. This is continuity equation. Maxwell used this to modify Ampere's law, but it's not the Maxwell equation. ये Maxwell नहीं है. So this is Faraday law. This is a part of Maxwell equation. This is Gauss law. Yes. And this is your modified Ampere's law. Yes, this is also a part of Maxwell equation. Next, beta. Figure shows a conducting loop of area 20 centimeter square and resistance 4 ohm. B is given, find the current. I am giving you B, you need to tell me the current. बेस्ट कोर्स फॉर 2026 जेई अगर आपको चाहिए बेटा तो आप विद्युत महापैक ज्वाइन कर सकते हो. उसमें हम 12 ऑफ जनवरी से लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अभी आपको सारा रिकॉर्डेड मिल जाएगा, वो आपके पास बाद में भी रहेगा, बट साथ में लाइव भी आने लगेगा आपका 12 ऑफ जनवरी से. जी, now EMF minus d phi by dt. करंट E बाय R, और बेटा ये मिली में आएगा. तो 200 मिली is 0.2. C option 0.2. Very good. Next. Figure shows a conducting loop of area 10 centimeter square lying in the YZ plane. B is given. V1, V2 across the resistors. V1, V2 across the resistors. देखें भाई, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू टी. P increases with time. Now to oppose this beta, this should be the induced flux density. इसे अपोज करने के लिए बाहर की तरफ आना चाहिए. For the outward flux density, current should be anti-clockwise.
which means V1 will be positive, V2 will be negative. So V1 will be minus 2 V2 and V1 positive, V2 negative. तो एक ही ऑप्शन बनता है बेटा, ए ऑप्शन. यहीं से हमें समझ में आ जा रहा है कि V1 पॉजिटिव आना चाहिए, V2 नेगेटिव बेस्ड ऑन करंट. नाउ सपोज आई वांटेड टू फाइंड द करंट. तो फ्लक्स इज V into area. I'm not using a minus sign. Why? I have already derived the current polarity. Total resistance is 15. Okay. So that is how you can find the current. E को नेगेटिव लेने की जरूरत ही नहीं है ना बेटा. अगर आपको पोलैरिटी फिगर आउट करनी है सुभादीप, तो आप माइनस एन डी फाई बाई डी टी से मत जाइए. Whenever you want to figure out the polarity, figure out like this by using the opposition and then use n d phi by dt. Then ignore all the negative positive. चलिए, now the magnetic flux is given. Find the EMF at 2 second. EMF निकालिए 2 second पे. Now whenever equation is given, Subhadeep, in that case beta you can use a minus sign. जब इक्वेशन दे रखी होती है तब माइनस लगाइए. बट व्हेन द डायग्राम इज गिवन यू कैन एक्चुअली फिगर आउट द डायरेक्शन. minus 100 12 minus 2 is 10 minus 1 volt. Yeah, very good. Minus 1 volt. चलिए next. A circular turn of radius 1 meter revolves at 60 rpm about its diameter aligned with the x-axis. Mu naught is given, h is given, peak value of induced voltage. Now listen very carefully beta how to deal with this. ठीक है? Let me take a sheet of paper. है ना? So magnetic field is like this. Now when the coil is rotating beta, the angle which the coil makes with the magnetic field will change. So right now field is perpendicular to the coil. It rotates by 90 degree. Flux will be 0 because coil and field are parallel. Again 90 degree, perpendicular, again 90 degree, parallel. So basically what happens is, as coil rotates, angle between coil and B changes. ठीक है? So therefore angle between B vector and area vector varies. So theta will be omega t. Omega is angular speed. So I will say suppose phi is B into area into sine omega t. Why sir sine omega t? Because beta if I take this position as t equal to 0,
Now beta, because if this is the position of the coil at t equal to 0, at t0 the flux is 0. Field and coil are parallel to each other. So starting flux should be 0. Therefore, I am using sine. If the starting flux was maximum, I will use cos. स्टार्टिंग में अगर फ्लक्स मैक्सिमम होता t0 पे तो मैं cos लेता, 0 है इसीलिए साइन. Now EMF d phi by dt d a omega cos omega t. So peak value will be omega into b into a. Now omega is 2 pi. Speed is given in RPM 2 pi n by 60. Now b is mu naught h. B is mu naught h. Area will be how much? Radius 1 meter. So pi r square. Area हो गया pi r square. Now beta 60 will be cancelled. Okay. This will be cancelled. 4 pi square 2 pi into 4 pi square. Pi square is almost 10. टू 48.05. समझ में आया लॉजिक? Understood the logic of the question beta? As the coil rotates, the angle changes, so flux will change. यहाँ पे बेटा फिगर मिसिंग है. Flux density is out of the page. बट यहाँ पे ना ओरिएंटेशन दिया नहीं है. चलो अगले पे चलते हैं. Voltage is given applied to a capacitor. Find the displacement current. Come on, everybody. You need the displacement current. I am giving you the voltage applied to a capacitor. Point 1475 cos 10 to the power 2t microampere. Okay. सुभादीप भाई एक बार चेक करो, इतना लो वैल्यू तो नहीं आना चाहिए.
Energy stored in a magnetic field in a solenoid of length 30 centimeter, diameter 3 centimeter, bound with 1000 turn and carrying a current of 10 ampere. Now beta, inductance will be mu naught n square A by L. Area beta, pi square So if I take pi square as 10, तो approximately will be 300 into 10 की power minus 5, 3 मिली के आसपास आना चाहिए, actually 2.96 millihenry. Now energy half Li square 0.148, ठीक है, 0.148 joule. Now, what is the Maxwell equation in the integral form? This is Faraday's law. What will this become in the integral form? Come on, everybody. Integral form में कैसा नजर आएगा? असलम भाई, मैंने बता तो दिया आपका डाउट. चलो भाई, बहुत बढ़िया. सजल भाई, अगर आपका आरआरबी क्लियर हो गया. Yes, this is the Faraday's law. तो आंसर will be B. बहुत बढ़िया. A truncated circular cone is made of iron. ये वाला जाने दो यार, इसका मतलब इससे EMFT से कोई लेना देना ही नहीं है. रेजिस्टेंस निकालने का निकाल सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी. J is given, find the charge density on that surface. चार्ज डेंसिटी बताइए, ठीक है. पर मीटर क्यूब होगा, से किलोमीटर पर मीटर क्यूब. तो यहां पे ना बेटा, यू कैन यूज द कंटिन्यूटी इक्वेशन. R square by R will be R. One millisecond बेटा. Radius is
So answer is 0.4598 10 to the power minus 4. देखो टेक्निकल और महापैक दोनों में क्लासेस होंगी बेटा, लेकिन टेक्निकल वाले में जो है उसमें सिर्फ टेक्निकल चलेगा और महापैक में टेक नॉन टेक दोनों अवेलेबल रहेगा। ये तो हम लोग कर चुके ना। ओके चलो ये क्वेश्चन बनाओ। कंसीडर वन टर्न रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. Plane of the loop is perpendicular to the line. Resistance 0.4. Flux density is given. Omega is given. I need to know the power. मुझे यहाँ पावर जानना है। मैंने आपको एरिया दे दिया, फ्लक्स डेंसिटी दे दिया। You need to tell me the power. जेके एसएसबी के लिए टेक्निकल, हाँ जेके एसएसबी में सिर्फ टेक्निकल ही आता है भाई। देखें आइए, पाई इज बी इंटू एरिया, now area is 50 centimeter square. Okay, now beta it will become omega cos omega t. Omega is 100 pi. 0.3927 0.192, ठीक है 0.1927 वॉट आपका आएगा। बहुत बढ़िया बख्शी जी, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो जो कल हमारे क्वेश्चंस रह गए थे वो डिस्कस कर लेते हैं। टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट 0 0 एंड 6 0. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ जीरो इक्वी पोटेंशियल कर्व, यानी पोटेंशियल जीरो? सपोज आई टेक अ पॉइंट x, y. नाउ पोटेंशियल विल बी q by 4 pi epsilon r. The charge is at 0 0. Net potential should be 0. I am saying a point x comma y is there. Now what to do beta? Take q by 4 pi epsilon common. X minus 6 square is y square, 4 x square plus y square. I am squaring both the sides. ठीक है, so it will be x square plus 36 minus 12x plus y square, 4x square plus 4y square.
So we can take this on the right hand side, 3x square plus 3y square plus 12x minus 36, 0. X square plus y square plus 4x minus 9. So if I take x plus 2 square plus y square, for that beta I have to add and subtract 4. बहुत बढ़िया भाई रौनक भाई, डी आएगा. Electric field is one dimensional between A and B. Psi A, psi B are electric potential at AB. What is the difference between psi A and psi B? Now beta, electric field increases by 20 kV per centimeter in a distance of 5. So I will say electric field minus 20. The slope will be 40 minus 20 by 5. X minus. So electric field will be 20 plus 4. Twenty plus 4x dx. Okay, x is in micrometer. Four x integration is 2x square. Okay. और इसको ऐसे कर लो, kV per centimeter kV per centimeter into micrometer. Okay. minus 100, 150, 10 की power 3 minus 15 volt. Answer will be okay. Why, sir? Because beta electric field is in x direction, so potential decreases. Electric field I cap, therefore potential decreases along x. So psi A minus psi B will be positive. ये 15 है. बहुत बढ़िया रौनक भाई. Electric field is given. What is the expression? Potential. Del V by del X is minus Ex. 2y cube minus 3y z square. 2xy cube x y cube minus 3xy z square. ये आ गया ना d. हर जगह से ये दिख रहा है. Okay. Answer will be D. I have to take the union. Capacitor has two metal plates spaced 6 mm apart. Okay. Space is filled with a glass plate of 4 mm, paper of 2 mm. Permittivity is given, capacitance. So beta, this is series combination. Whenever dielectrics are divided along thickness, it is series combination. So C1 is epsilon naught epsilon 1 A by 1. So first I am taking glass. Epsilon naught into 8 area by 4 mm. T2. दूसरा air है. Second one is air. नहीं, sorry, paper. The relative permittivity is 2 and the thickness is 2 mm.
So 1 by C is 1 by C1 plus 1 by C2. 4 by 8.5 by 2 by 2, 1.1 by epsilon naught. 8.85 into 10 to the power minus 12. 500 into 500, 25 into 10 to the power 4. Mm square 10 to the power minus 6. 1.5 mm. 5 into 10 to the power minus divided by 1.475. बहुत बढ़िया. Electric field is given. I need the potential difference. Del V by del Y. Del V by del Z. Now VAB. In EMFT na beta, it is always treated as VB minus VA. 6 into 1 by 4 minus 5 into 2 minus 6 into 2 by minus 7 minus 5 into 1. ठीक है? So minus 6 by 4 minus 10 minus 6 into 2, 12 by 7 plus 5 minus 8.214. Uniform electric field is directed along positive x-axis. Potential difference, because it is uniform electric field, it is constant. So simple, E into length 60 into 15 minus 5. 6 volt. Electric field is given. I need the incremental work done required to move a charge in the direction 6 micrometer at 0. So DL is 6 micrometer arrow cap. Now work done is now E dot DL. The charge is what? 20 microcoulomb. E dot DL 100 into 6 micrometer. Because electric field arrow cap is 100. Minus 120 into 100 into 10 to the power minus 12. Minus 12 nano. Yes, see. So last question. Parallel plate air capacitor 2 mm thick dielectric relative permittivity. What is the new separation? So capacitance is unchanged. So capacitance is earlier this. Okay. In the second case, the C2 is divided into two parts. The thickness of the dielectric is 2 mm. And let us say in the remaining capacitor, we have, let us say, D1 is air. Because the separation has changed. Separation बदल गई है तो मैंने D1 मान लिया. 1 by C1 will be equal to 1 by C2.
Now, whenever you insert a dielectric along the thickness, it is a series connection. Given by epsilon naught A. So D will be 2 by 3 plus D1. D1 will be D minus 2 by 3, 5 minus 2 by 3, 4.33. So total separation, beta, this is the thickness of air plus 2 mm is the dielectric, 6.3. समझे, मेरे पास एयर का थिकनेस आ गया 4.33 और 2 mm डाइलेक्ट्रिक का है, तो टोटल है 6.33. ठीक है, आज के लेक्चर में कोई असाइनमेंट नहीं है. टुमारो वी विल मीट टू डिस्कस द PYQs. Along with that, I will discuss this assignment of lecture number 5. मैग्नेटिज्म वाला असाइनमेंट भी डिस्कस करूंगा. 14 क्वेश्चंस आर देयर एंड आई विल आल्सो डिस्कस द PYQs. तो टुमारो वी विल मीट एट 4 PM अगेन. ठीक है, कल 4 बजे फिर से मुलाकात होगी. PYQs डिस्कस होंगे और ये लेक्चर 5 वाला असाइनमेंट डिस्कस होगा. ठीक है भाई, चलिए. और YouTube वाले बच्चों को मैं बता दूं बेटा, बहुत ही जल्द हमारे कोर्सेज के प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, इसीलिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप फटाफट से जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए मिनिमम प्राइजेस में. बाकी कोई भी क्वेरी रहती है रिलेटेड टू डिस्काउंट, जस्ट मैसेज अस ऑन WhatsApp 7089047561.